Good evening, everybody. Bonsoir, Vanakkam, and Susayam. It is a great honor to welcome Dr. Jayanti Ravi and Adit Ravi and so sorry. She needs no introduction because everybody knows her. She's a wonderful mother to beautiful children as Adit Ravi, and unfortunately, we will miss Kripa Ravi, who could not come because she needs to rest her voice. And she's multifaceted person, Shakti, and you see all that is happening here in Auroville. And she's a wonderful singer, and that we had opportunity to listen at the auditorium and many other places in Savitri Bhavan and today here. And the way they came, it is called Nagarasankirtanam, which means the singers, the bhaktas, they go around, and especially towards the residence area, singing the praise of Lord. It can be Krishna or any other gods. And they really bring out the devotion that is expressed through their songs. And after which, they are going to continue in that line and through many other songs on the Lord Krishna, because on the month of Magashira Vaibhav, they sing specially the praises to the Lord Krishna or Vasudeva. Vanakkam. Good evening to all. So, we'll be starting today with Margari's second week of Friday Fiesta, with ma'am as a special guest and up as a special person to perform. So, I will be giving a short introduction about our day's topic or a title, whatever we can have it as, Race of Immortality. Book of Fate, the word of fate. In silent bounds, bordering the mortal's plane, crossing a wide expanse of brilliant peace, Narad,
the heavenly sage from paradise, came chanting through the large and lustrous air. He sang the name of Vishnu and the birth and joy and passion of the mystic world. Here, mystery is filled with, the earth is filled with mystery, so that though there is a pain, joy behind pain, and of the lotus heart of love, love is the savior word for the mortal men. So, love of the divine is like the rays of the dawn that evades the ignorance of darkness. That was the work of Andal and Meera. They lived their life to the fullest with devotion and surrender. From the immortal regions above, Narad comes chanting to the earth below. As he approaches the earth scene of ignorance and strife, a change comes over his mood and the theme of his song changes. Thus, the words he spoke as a spiritual aspiration which governs the force of Tamil culture, Indian culture, its core of thought, its ruling passion. So Sri Aurobindo emphasized more about this in his works. So now our Ravi sir will be continuing our next part. Thank you so much. Very good evening to one and all. Today's evening is about the rays of immortality. The immortality is the immortality of devotion. So two goddesses of devotion, Meera from the northern part of India and Andal from the southern part of India. So two absolutely, goddesses of devotion, whose devotion is, they are the epitomes of devotion. And if one thinks of devotion, these two will always be in the top of your mind. Andal was born in the southern part of India. Her birth itself remains a little bit of a mystery. And she is attributed to the 7th or 8th century. And the Tirupavais are poetry which are again attributed to Andal. And especially in this, the Margari Masam, they are sung for these 30 days. Meera was born in the Marwar region of Rajasthan. The town was Mertha, to a royal family. And she lived in, thank you. So she lived in the royal palaces, and yet she was completely devoted for her entire lifetime to Krishna, despite all the ups and downs that came her way. So devotion it is, and when we talk of Andal, her very first Tirupavai, which is sung on the first day of the Margari Masam, which is the first full moon of the month, where she's actually edging the people all around to actually seek the feet of the Lord, the feet of the divine. And then she's saying that all those who are compassionate, all those who are serious, who are focused, all those who want to surrender, who seek the surrender, that full surrender, the complete surrender, please come and sing the praise of the Lord. So Margari Tingal, we start with that.
மார்கழி திங்கள் மதி நிறைந்த நன்னாளால் மார்கழி திங்கள் மதி நிறைந்த நன்னாளால் நீராட போதுவீர் பொதுமினு நேரிழையீர் நீராட போதுவீர் பொதுமினு நேரிழையீர் சீர்மல்குமாய் பாடி செல்வ சிறுமீர்கள் சீர்மல்குமாய் பாடி செல்வ சிறுமீர்கள் கூர்வேல் கொடுதொழிலன் நந்தகோபல் குமரன் ஏறந்த கண்ணீர் யசோத இளம் சிங்கம் ஏறந்த கண்ணீர் யசோத இளம் சிங்கம் கார்மேனி செங்கண் கதிர்மதியம் போல் முகத்தார் நாராயணனே நமக்கு பறை தருவாய் நாராயணனே நமக்கு பறை தருவாய் ஆரோர் புகழ படிந்தெனோ பவர் நாராயணனே நமக்கு பறை தருவாய் ஆரோர் புகழ படிந்தெனோ பவர் Look at poetry or bhajan. It's always a play between the saguna and the nirguna. That is, the one with the form and the formless. It's never really an either or. It's always both together. So somewhere, both in the case of Andal as well as Meera, all their poetry or bhajans have always been this mix of the human form and the nirguna. So probably it's from a bhakti perspective. I think the need of saguna and nirguna, the combination of saguna and nirguna, is absolutely important, very significant. There's another little this thing. We have some charts over there on the walls, and people who are free to. There are some pens over there also. People can write, draw, or put in their comments on the side. People wish to stand up and dance, twirl at any point of time. They're absolutely welcome to do that. There's somebody painting on this side that I notice. So any activity as you immerse yourself in this bhakti, this little session of bhakti, the session of devotion, is absolutely welcome. We probably encourage you to do that. So as we move on to Meera, so Pyare Darshan Dijo Aaj is all about Meera pining for the Lord. She's trying to seek the Lord, and she's pining for the Lord. And in this poetry, this bhajan, she's talking about her listlessness. She day in and day out, she's completely listless and is just pining for the Lord, and keeps on requesting the Lord to appear. Appear again, she goes into the nirguna and says, appear inside and make that connect.
So, प्यारे दर्शन दीजो आज. प्यारे दर्शन दीजो आज, प्यारे दर्शन दीजो आज, तुम बिन रहो न जाए, प्यारे दर्शन दीजो आज, प्यारे दर्शन दीजो आज, तुम बिन रहो न जाए, प्यारे दर्शन दीजो आज, तुम बिन रहो न जाए, जल बिन कमल चंद्र बिन रजनी, जल बिन कमल, जल बिन कमल चंद्र बिन रजनी, ऐसे तुम बिन सोनी सजनी, ऐसे आकुल व्याकुल किरूर नदीन, आकुल व्याकुल किरूर नदीन, आकुल व्याकुल बिरह कलेजो खाए, आकुल व्याकुल पिरूर नदीन, बिरह कलेजो खाए, तुम बिन रहो न जाए, तुम बिन रहो न जाए, दिवस न भूख नींद नहीं रहना, दिवस न भूख नींद नहीं, तन सुखत मन आवे बैना, कहाँ कहूँ कछु तह तरावे, कहाँ कहूँ कछु तह तरावे, मिल कर तपस बुझाओ, क्यों तरसाओ अंतर्यामी, क्यों तरसाओ अंतर्यामी, आन मिलो कृपा कर स्वामी, मीरा दासी जन्म जन्म की, मीरा दासी जन्म जन्म की, पड़ी तिहारो So, in Andal's Tirupavai, the third poetry or the third Parsumam is all about Ongi Ulaga Alanda Uttamam. This is about praising Lord Trivikramam.
You all would have heard of that story of Mahabali, the Raja Mahabali, and how Lord Vishnu comes in his Vamana avatar and measures the entire world in 2 steps. And then there is no other place to keep the 3rd step. And Mahabali offers his head. Basically, it signifies the crushing of the ego. Mahabali was a Mahadani. Yet, he used to think that he is the biggest donor, or so that ego is what had to be crushed. And this was a lesson that had to be learned from that. And this speaks about the concept of abundance, and that abundance again is expressed in the Saguna form, and how it talks about sufficient rain as you invoke the Lord, the cows are milking more, the birds and the bees, everybody in a state of tranquility. And that's achieving that state of tranquility, seeking again refuge in the feet of the Lord. So this is a beautiful piece. Olaga Ongi Olaga Alanda Uttamam. I'll request all the young children also to join. You can sit straight and join if you, okay? ஒரு லைன் பாடுறேன், நீங்க ஃபாலோ பண்றீங்களா? ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன் பேர் பாடி உலகளந்த ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன் பேர் பாடி நாங்கள் நம் பாவைக்கு சாற்று நீராடினார் தீங்கென்று நாடெல்லாம் திங்கள் மூமாறி பெய்த போகு சென்னல் உடுக்கையில் உகட பூங்குவளை போதில் பொறிவண்டு கண்படுப்ப தேங்காதே பூக்கிருந்து சீர்த்த மூலை பற்றி வாங்க கூட நிறைக்கும் வள்ளல் பெரும் பசுக்கள் நீங்காத செல்வம் நிறைந்து லோரம் பாவாய் ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன் பேர் பாடி நாங்கள் நம் பாவைக்கே So back to Meera once again with Mohe Lagi Latak. So Meera is talking about her addiction to the feet of the Guru. Mohi Lagi Latak, Guru Charananaki. So Guru Charan is like something like symbolizing a toe hold. So again, in your the complete surrender, in the process of complete surrender, just to get a toe hold,
So she says, she gets hold of the Guru Charan and she says, I am addicted to my Guru's Charan. Her Guru is Lord Krishna. And she sings about that addiction and talks about that and says how that addiction helps her to turn inwards, to start looking inwards. And that, she says, is the greatest benefit of the Guru Charan. Lagi latak Guru Charanan ki. गुरुजी को गुरुजी को करे वंदना गुरुजी को करे वंदना भाव से बारंबार भाव से बारंबार नाम सुनो का नाम सुनो का से किया नाम सुनो का से किया नाम सुनो का से किया जिसने भव को पार जिसने भव को मोहे लागी लटक गुरु चरणन की 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 चरणन की गुरु चरणन की चरणन की गुरु चरणन की लागी
भवसागर भवसागर अब सूख गया है 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 फिक्र नहीं फिक्र नहीं फिक्र नहीं अब तरनन की लागी लटक गुरु चरणन की मोहे लागी लटक गुरु चरणन की मोहे लागी लटक गुरु चरणन की मीरा के प्रभु गिरिधर नागर 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 उलट भई उलट भई उलट भई मोरी अखियन की लागी लटक गुरु चरणन की मोहे लागी लटक गुरु चरणन की मोहे लागी लटक गुरु चरणन की गुरु चरणन की गुरु चरणन की सा 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 नी सा 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 नी सा 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 रे 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 सा 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 नी सा रे सा नी सा रे सा नी सा रे सा नी सा रे सा रे रे सा
As we said, these Tirupavais are sung in the Margari Masam, the 30 days. And this is also known as the Pavai Nombu, the prayers for these 30 days of the Pavai Nombu. And as it nears the completion, I think the 27th Pasuram is Kudare Velum Sira Govinda, where the name of Govinda comes for the first time in the Tirupavais. And Govinda is invoked at that point of time. And here, Andal seeks for her gopis, for all the gopis. So every Krishna Bhakta is a gopi. Gopi doesn't really relate to the female form as such, but every Krishna Bhakta is a gopi, is termed as a gopi. And for the gopis, some sammanam, basically an appreciation. And that appreciation is again saying that give us this sense, bestow upon us this sense to adhere, to grab your feet, to surrender to the Lord in totality, complete surrender to the Lord in totality. That's what they seek in Kudare Velum Sira Govinda. கூடரை வெல்லும் சீர் கோவிந்தா கூடரை வெல்லும் சீர் கோவிந்தா கூடரை வெல்லும் சீர் கோவிந்தா உந்தன்னை கூடரை வெல்லும் சீர் கோவிந்தா உந்தன்னை பாடிப்பறை கொண்டு யாம் பெரும் சம்மனோ கூடாரை வெல்லும் ஸ்ரீ கோவிந்தா உதன்னை பாடிப்பறை கொண்டு யாம் பெரும் சம்மனோ நாடு புகழோ பரிசை நாடு புகழோ பரிசை சூடகமே தோள்வளையே தோடே செழி பூவே சூடகமே தோள்வளையே தோடே செழி பூவே பாடகமே என்றனைய பல்கலனும் யாமணியோம் பாடகமே என்றனைய பல்கலனும் யாமணியோம் ஆடை ஊடுப்போம் அதன் பின்னே பால் சோறு பெய்து ஆடை ஊடுப்போம் அதன் பின்னே பால் சோறு முடனை பெய்து முழங்கை வழி வாழ குடியிருந்து குளிர்தேலோரும் பவை கூடாரை வெல்லும் ஸ்ரீ கோவிந்தா உதன்னை பாடிப்பறை கொண்டு யாம் பெரும் சௌமானம் நாடு புகழோ பரிசைகள் சூடகமே தோள்வளையே தோடே செழி பூவே பாடகமே என்றனைய பல்கலனும் யாமணிவோம் ஆடை ஊடுப்போம் அதன் பின்னே பால் சோறு
a little, something of interest, largely when you look at a Meera bhajan. So Meera is all about, as an individual, her seeking solace at the feet of the Lord. And Andal's Tirupavai largely is invoking the goodness for the community, for the country, for the nation, for the larger community as such. But towards the end, Meera has a tough life. And she has come away from her home, and she's in Dwaraka. And the land of Mewar, the area in the country into which she's married, the rulers to whom she's married, I mean, they are undergoing a very difficult time. And the rulers at that time sort of understand their mistake, and they send a group of people to plead with her to come back. And they realize that she's actually a saint. And so when they go to her to plead with her, that's when she actually is one of her poetry, her bhajans, where she actually seeks for the community. And she prays to the Lord, where she invokes and praises the Lord and says that you were the savior of Draupadi. You saved, you slayed Hiranyakashipu, and you saved the Gajaraj, and actually gave him moksha. So you are the savior of all. So please, she pleads to him in this Hari Tumharo.
हरो जन की लाज राखी द्रौपदी की लाज राखी तुम बढ़ायो जी द्रौपदी की लाज राखी तुम बढ़ायो जी हरि जन की भक्त कारण रूप नर हरि धर्यो आप शरीर हरिण कश्यप मारलीनो धर्यो नाहिन हरि तुम्हारो जन की जन की भी So we all know about Krishna's birth and how Krishna was born to one as well, was brought up by another. So Andal in her poetry on Urti Maganai Pirandu Urti Maganai Valara. So this is again towards the end of the Tirupavais, and where she brings about this rahasyam, the secret of Krishna's birth, where she was actually born to, without naming Devaki and Yashoda. She very respectfully, without naming them, but actually
brings out this little rahasyam, the secret over there. Uruti maganai pirendu, uruti maganai valara. ஒருத்தி மகனாய் பிறந்து ஒருத்தி மகனாய் பிறந்து ஓரிரவில் ஒருத்தி மகனாய் ஒளித்து படர ஒருத்தி மகனாய் பிறந்து ஓரிரவில் ஒருத்தி மகனாய் ஒளித்து படர ஒருத்தி மகனாய் பிறந்து ஓரிரவில் ஒருத்தி மகனாய் ஒளித்து படர தருகிலாராகி தாந்திங்கு நினைத்த தருகிலாராகி தாந்திங்கு நினைத்த கருத்தை பிழைப்பித்து ஜன்மயேற்றில் கருத்தை பிழைப்பித்து ஜன்மயேற்றில் நெருப்பென்ன நின்ற நெடுமானே ஊனை நெருப்பென நின்ற நெடுமானே ஊனை நெருப்பென நின்ற நெடுமானே ஊனை அர்ச்சித்து வந்தோம் பல்தருதியாக திருத்தக்க செல்வமும் சேவகமும் யாம் பாடி திருத்தக்க செல்வமும் சேவகமும் யாம் பாடி திருத்தக்க செல்வமும் சேவகமும் யாம் பாடி வருத்தமு தேர்ந்து மகிழ்ந்தேலோரே உபவாய் வருத்தமு தேர்ந்து மகிழ்ந்தேலோரே உபவாய் வருத்தமு தேர்ந்து மகிழ்ந்தேலோரே உபவாய் வருத்தமு தேர்ந்து மகிழ்ந்தேலோரே உபவாய் ஒருத்தி மகனாய் பிறந்து ஓரிரவில் ஒருத்தி மகனாய் ஒளித்து வளர ஒருத்தி மகனாய் பிறந்து So Mirabai's life was always tough, and at some point of time it's reflected again in her poetry. That sadness, the element of sadness, where she actually, in one of them, she talks about the insults that she has borne, the atrocities that she has borne, the difficulties that she has gone through. And then she pleads to the Lord. The Hindi word that she says, please show yourself to me. Again, she uses a saguna bhava for actually a nirguna outcome. And she says that Prabhu, ao, please come, my Lord, please come, my Lord, in this very endearing poetry. The pleading is really very endearing. मैं हरि चरणन की दासी. मैं हरि चरणन की दासी मैं हरि चरणन की दासी मैं हरि
चरणन की दासी मैं हरि चरणन की दासी मैं हरि चरणन की दासी मैं हरि चरणन की दासी मलिन विषय रस त्यागे जग के 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 राम राम रस प्यासी मलिन विषय रस त्यागे जग के राम नाम रस प्यासी जन्म जन्म की दासी मैं हरि चरणन की दासी आओ प्रीतम सुंदर निरूपम आओ प्रीतम सुंदर निरूपम आओ प्रीतम सुंदर निरूपम अंतर होत उदासी आओ प्रीतम सुंदर निरूपम अंतर होत उदासी मानत नहीं मन धीरज मोहन मानत नहीं मन धीरज मोहन तड़पत निस दिन आहे मानत नहीं मन धीरज मोहन तड़पत निस दिन आहे सावरिया मोहनिया सावरिया मोहनिया नागरिया मेरो पिया सावरिया मोहनिया नागरिया मेरो पिया सावरिया मोहनिया नागरिया मेरो पिया हरिया वो आओ आओ जी हरिया आओ आओ आओ
सहिया दुख अपमान कष्ट सब सहिया दुख अपमान कष्ट सब सहिया कुटिल जगत के हासी दुख अपमान कष्ट सब सहिया कुटिल जगत के हासी मीरा कहे प्रभु गिरिधर नागर 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 सारो जगत के वासी मीरा कहे प्रभु गिरिधर नागर मीरा कहे प्रभु गिरिधर नागर सारो जगत के वासी मीरा कहे प्रभु नागर सारो जगत के वासी जन्म जन्म की दासी मैं हरि चरणन की दासी मैं हरि चरणन की दासी मैं हरि चरणन की दासी Today's presentation started in a Nagarasankirtanam format, where from the Savitri Bhavan, a group of people was singing a bhajan, and as they entered this place, likewise the closure will also be in the similar format. We started with Andal, and we'll complete with the Meera bhajan, and as you know, probably your stanza will be sung here and will be led out. People can follow. We go up to Savitri Bhavan. This will take it to the closure of today's presentation. Both Andal as well as Meera, Andal in her Tirupavai and Meera also one of her famous bhajans, which we will sing now in the end. They talk about, or they put in a request to the Lord to be, in service of the Lord, to get that opportunity to be anchored in the Lord, to be always in service of the Lord. This one, which is Chakar Rakhoji, that is, keep me as your, loosely used, as your servant, as the servitor of the divine. So keep me anchored all the time. Banish all other thoughts. Banish every other thought from my mind except this one. Give me this opportunity to grab hold and just cling to this. Chakar Rakhoji, whatever be the situation, wherever I am, I might in my regular lifetime climb the ladder of success or whatever is defined as success in the worldly sense. But it says, Uche Uche Mahal Banasu, but vich rakhu bari. But even if I actually climb those heights, but I must remember to have those little peak holes
where I will always be anchored or always be looking at the Lord, at divinity as such. Chakar Rakhoji. Something. Can we have a, we'll probably offer a Tirupavai, one more Tirupavai. How are we doing on time? Do we have time for one last Tirupavai followed by Chakra Rakhoji? Will that be or? Okay. வங்க கடல் கடைந்த மாதவனை கேசவனை வங்க கடல் கடைந்த மாதவனை கேசவனை திங்கள் திருமுகத்து செய்யிழையார் சென்றிரைஞ்சு அங்க பறை கொண்ட ஆற்றையாணி பூங்குவை பைங்கமல தழ்தெறியில் பட்டபிரான் போதை சொன்ன சங்க தமிழ் மாலை முப்பதோத பானே சங்க மாலை முப்பதோத பானே இங்கு பரிசுடைப்பார் இரண்டு மால்வரை தோள் செங்கல் திரு முகத்து செல்வத்தீரு மாலார் எங்கும் திருவருள் பெற்று எவ்வுருவ चाकर राखो जी, चाकर राखो जी, मन चाकर राखो जी, मन चाकर राखो जी, चाकर राखो जी, मन चाकर राखो जी, राखो जी। चाकर राखो, चाकर राखो, चाकर राखो जी, चाकर राखो, चाकर राखो, राखो जी, मन चाकर राखो जी, चाकर राखो जी, चाकर रहसू बाग लगासू नित उठ दर्शन पासू, चाकर रहसू बाग लगासू नित उठ दर्शन पासू, चाकर रहसू बाग लगासू नित उठ दर्शन पासू, चाकर रहसू नित उठ दर्शन पासू। वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में तेरी लीला गासू, चाकर राखो जी, मन चाकर राखो जी, चाकर राखो जी। मोर मुकुट पीतांबर सोहे गलवे जलती माला, मोर मुकुट पीतांबर सोहे गलवे जलती माला, वृंदावन में धेनु चरावे, वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला, मोहन मुरली वाला, मन चाकर राखो जी। जोगी आया जोग करन को तप करने सन्यासी, जोगी आया
हरि भजन को साधु आया, हरि भजन को साधु आया, हरि भजन को साधु आया, हरि भजन को साधु। वृंदावन के वासी, वृंदावन के वासी, मन चाकर राखो जी, मन चाकर राखो जी। ऊंचे ऊंचे महल बनासू, बिच बिच राखूं बारी। ऊंचे ऊंचे महल बनासू, बिच बिच राखूं बारी। सांवरिया के दर्शन पासू, सांवरिया के दर्शन पासू, पहर कसुंबी साड़ी। मन चाकर ओ जी, मन चाकर, चाकर राखो, चाकर राखो, चाकर राखो जी, चाकर राखो, चाकर राखो जी, मन चाकर राखो जी। हरे हरे बाग लगासू, विच विच राखूं क्यारी। हरे हरे बाग लगासू, विच विच राखूं क्यारी। सांवरिया के दर्शन पासू, सांवरिया के दर्शन पासू, पहर कसुंबी साड़ी। मन चाकर राखो जी, मन चाकर राखो जी। मीरा के प्रभु गहर गंभीरा, हृदय धरो जी धीरा। मीरा के प्रभु गहर गंभीरा, हृदय धरो जी धीरा। आधी रात प्रभु दर्शन दीनो, आधी रात प्रभु दर्शन दीनो, आधी रात प्रभु दर्शन दीनो। प्रेम नदी के तीरा, मन चाकर राखो जी, मन चाकर राखो जी। चाकर राखो, चाकर राखो, चाकर राखो जी। चाकर राखो, चाकर राखो, चाकर राखो जी। मन चाकर राखो, मन चाकर राखो। चाकर राखो, चाकर राखो, चाकर राखो जी। चाकर राखो, चाकर राखो, चाकर राखो जी। मन चाकर राखो जी, मन चाकर राखो जी। चाकर रहसू, बाग लगासू, नित उठ दर्शन पासू। 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 वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में, तेरी लीला गासू। वृंदावन की कुंज गलिन में, तेरी लीला गासू। चाकर राखो जी। We also have refreshments over here provided at the back in the dining hall for all the adults. Refreshments in the dining hall. चाकर राखो, चाकर राखो, चाकर राखो जी। चाकर राखो, चाकर राखो, चाकर राखो जी। मन चाकर राखो जी, मन चाकर राखो जी। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल में जंती माला। 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 वृंदावन में धेनु चरावे, वृंदावन में धेनु चरावे, वृंदावन में
धेनु चरावे वृंदावन में धेनु चरावे मुरली वाला मोहन मुरली